Hello friends, welcome back my YouTube channel MS Maths. In this video I will discuss conjugate of a complex number. So basically यहाँ पर हम बात करेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स नंबर होता है जिसको हमने हमारे प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस किया है, आप वो वीडियोस प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या आई टैब पे क्लिक करने पर मिल जाएगा. So let's start with the topic of complex conjugate of a complex number. So first recall that what is a complex number. So basically complex number is nothing but z, we are representing it by z, is nothing but x plus iota y, where x is your real number, okay, and y is your, or nothing but not real number, we can say it is a real part and it is a imaginary part, and x and y are belonging from a real number. So in this case we are representing or we are writing it as a symbol addition x plus iota y. Okay, it may be z is equals to x minus of iota y. Okay, so this is also a complex number. So what is the relation of this number and this number? Okay, what is the relation of this x is equals to z is equals to, I say this z1 is equals to x plus iota y and this z2 is equals to x minus iota y. So basically the number is what, the topic is what, the complex conjugate, and the conjugate means that this particular word stands for opposite of a sign of imaginary part. यानी कि जो आपका इमेजिनरी पार्ट है, यानी कि ये वाला आयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका जो साइन है वो यहाँ पर क्या है, पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है. सो दीज बोथ आर कॉन्जुगेट ऑफ ईच अदर. यानी कि हम बात करते हैं, सो अगर मैं बोलूँ व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ x1, सॉरी z1, व्हाट इज द कॉन्जुगेट ऑफ z1 एंड z1 इज नथिंग बट माई x प्लस आयोटा y, तो हमेशा क्या करना होता है, आपको इमेजिनरी नंबर का साइन चेंज करना होता है. तो x प्लस आयोटा y, और अगर मैं बोलूँ इसका कॉन्जुगेट, सो द कॉन्जुगेट ऑफ z1 is nothing but x minus iota y. It means the conjugate of z1 is nothing but z2. Okay, so this is the relation. Similarly, I can also write the conjugate of z2 is nothing but z1. It means these both number are the conjugate of each other. So what is the meaning of conjugate? Conjugate is nothing but conjugate of a complex number. So this may be considered as a definition of conjugate of complex number. If a complex number z is denoted, z is defined as x plus iota y, then the conjugate of z is z bar. This is what? Z bar. It means that, what is the meaning of this z bar? It means that the opposite sign of imaginary part, imaginary part. Okay, so for example, if your z is equals to x plus iota y, then the conjugate of it denoted by z bar is nothing but conjugate of z. So this is what the conjugate of z, and z bar is equals to the opposite sign of its imaginary part, the opposite sign of its imaginary part. So what is the sign? It is plus, then it is x minus iota y. So same as I can make the definition with respect to minus. It means if a complex conjugate is defined as other than this x minus iota y, then it is also denoted like this. And now the conjugate is what? For this case, if my z is equals to x minus iota y, then the conjugate of this z bar is nothing but x plus iota y.
सो जब भी आपके पास में कॉन्जुगेट का क्वेश्चन आए तो आपको इमेजिनरी पार्ट को क्या करना होता है, साइन चेंज करके लिखना होता है. फॉर एग्जाम्पल, I have my z is equals to 3 plus iota 4. Okay, so this is a complex number. So what is z bar? In this case, it is 3 minus iota 4. Okay, so this is the conjugate of this number. Now there are some properties. In the very first video मैंने आपको बताया था कि रियल नंबर जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर का एक सबसेट होता है. ओके, व्हाट इज द रियल नंबर? आर. इट इज अ सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कि रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर का एक स्पेशल केस होता है. सो अगर मेरा y 0 हो जाए कॉम्प्लेक्स नंबर में, देन माई z इज इक्वल्स टू 4. इट मीन्स 0 आयोटा. ओके, सो इट इज नॉट नेसेसरी कि मैं इसको लिखूं. तो इफ माई कॉम्प्लेक्स नंबर इज प्योरली रियल नंबर, ओके, दिस इज व्हाट, अ प्योरली रियल नंबर. सो अगर ये प्योरली रियल नंबर होगा तो इस केस में इसका z बार क्या होगा? सो इन दिस केस आई विल राइट इट एज 0 आयोटा, 4 प्लस 0 आयोटा, एंड देन z बार इज नथिंग बट 4 माइनस 0 आयोटा विच इज इक्वल्स टू 4. सो आई कैन कंक्लूड फ्रॉम दिस that the property of complex conjugates. So there is a properties, there are some properties of complex conjugates, so which I will write here. So पहली प्रॉपर्टी हमने यहाँ पर देखा है कि जब z आपका प्योरली रियल होगा, सो द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z इज प्योरली रियल, इट मीन्स y इज इक्वल्स टू 0. प्योरली रियल का मतलब क्या हो जाएगा? तो y इज इक्वल्स टू 0 फॉर दिस z x प्लस आयोटा y. सो द z इज इक्वल्स टू x, देन तब क्या होगा? z बार जो होगा वो z के इक्वल हो जाएगा. आर यू गेटिंग? z क्या था हमारा 4, हमने उसका बार किया, हमें क्या मिल गया? 4 मिल गया. सिमिलरली द नेक्स्ट ऑब्जर्वेशन विल फ्रॉम द सेकेंड एग्जाम्पल. I can take the example like this. If my z is equals to minus 4 iota, okay, what is this? In this case, I can write it as z is equals to 0 minus 4 iota, means it is what? Purely imaginary. यहाँ पर रियल नंबर वाला जो पार्ट है, यानी कि रियल पार्ट जो होता है वो क्या है? 0 है. तो इसका मतलब क्या हुआ? ये प्योरली इमेजिनरी है. अब अगर मैं इसका बार निकालूंगा, z बार, यानी कि कॉन्जुगेट फाइंड करूंगा, तो इन दैट केस हमारी डेफिनेशन क्या कहती है कि इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करना. हमने यहां पर भी वही किया था, हम यहां पर भी वही कर देंगे. तो 0 प्लस 4 आयोटा. नाउ व्हाट कैन आई कंक्लूड फ्रॉम दिस? सो दिस विल बी द सेकेंड प्रॉपर्टी. इफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z is nothing but x plus iota y is purely real number, it means x is equals to 0. So the z is equals to, okay, in this case z is equals to x only, and in this case z is equals to iota y. So the z bar, then z bar is equals to minus of z. You can see this is what? Z is equals to minus 4 iota, and you are changing the sign minus to plus. So it is what? Z bar is equals to minus z. Okay, you can see one more example. Okay, this is the definition. यहीं पे लिख देता हूँ मैं. So the next example will look like this. If my z is equals to 3 iota, it means what? Purely imaginary. So the z bar is equals to minus of 3 iota. So what is minus 3? It is z. So the z bar is equals to minus of z. So this will be your second property. Now third and very important property. If I have my z is equals to, okay, 3 plus 4 iota, then the complex conjugate is nothing but 3 minus 4 iota. साइन चेंज कर देंगे आप. प्योरली सॉरी जो इमेजिनरी पार्ट है उसका साइन चेंज कर दिया हमने. ओके, अब मैं वापस से इसका क्या करता हूँ? z बार का बार करता हूँ. आर यू गेटिंग? मैंने कॉन्जुगेट का कॉन्जुगेट निकाला है, तो वो क्या होगा? इसका वापस से साइन चेंज कर दो, तो 3 प्लस 4 आयोटा है. व्हाट इज दिस? z. मीन्स दैट द कॉन्जुगेट ऑफ कॉन्जुगेट
is nothing but that number, same. So the third property is the conjugate of conjugate is equals to z. So these are the three properties in the complex conjugate. So अब हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट का ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन एंड उससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं, फॉर एग्जांपल मॉड्यूलस यानी कि मॉड जिसको हम कहते हैं मैग्नीट्यूड फाइंड करना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग MS मैथ्स. फॉर मोर वीडियोस यू कैन सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस. थैंक यू, बाय बाय.